My name is Yogendra. Welcome to my YouTube channel G Square Techno. So today I will teach you brief introduction of callable statement, types of parameter in callable statement, and last we will see practical session. So without any further ado, let's get started. So what is callable statement? So callable statement is सब interface of prepared statement, right? So callable statement एक सब इंटरफेस है प्रीपेड स्टेटमेंट का, राइट. सेकंड इज कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस मेथड आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर. लाइक हम डेटाबेस में स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तब कॉलेबल स्टेटमेंट यूज होता है. एंड हमारा बिजनेस लॉजिक है वो हम डेटाबेस के अंदर लिखते हैं. सो दिस आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलेबल स्टेटमेंट. सो 3 types of parameter in callable statement. First is in, second is out, and third is in out. So in parameter use input to the procedure and we can set the value using set method. Second is out. Out used to output of store procedure, that means return value of store procedure, and we access value using get method. And is in out. This provide both input and output value, and we can use set method and get method to access in out parameter, right? Let's start the practical session. Let's create one Java file. Right click, new, Java class, right? So I will give my class name is callable statement underscore test. ओके, फिनिश. जो हमारा जो बेसिक 7 स्टेप था डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने का, वही स्टेप यहाँ पे यूज होगा. तो मैं यहाँ पे दूसरी बार नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. First of all, we need to write main method public static void main, in which we copy all the steps that we have already seen, right? So हमारा फर्स्ट स्टेप था import the package, right? हमारा सेकेंड स्टेप था load and register the driver. थर्ड स्टेप था create the connection, एंड फोर्थ था हमारा स्टेटमेंट. बट हम यूज कर रहे हैं कॉलेबल स्टेटमेंट, सो हमें सबसे पहले कॉलेबल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे कुछ एरर थ्रो कर रहा है. यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा थ्रोस कीवर्ड class not found and SQL exception, right? हम यहाँ पे कॉलेबल स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलेबल स्टेटमेंट CS इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल, राइट? यहाँ पे हम हमारी क्वेरी लिखेंगे, राइट? बट हमें क्वेरी लिखनी है, इससे पहले हम एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है. तो हम पहले स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं. JDBC is my database name and student is my table name, right? So go to JDBC database name, go to routines, add new routines and give your procedure name. और मैं यहाँ पे प्रोसीजर का नाम टेस्ट रखूँगा, सो राइट टेस्ट. एंड हम यहाँ से प्रोसीजर और फंक्शन दोनों क्रिएट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे प्रोसीजर क्रिएट करूँगा और मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर यूज़ करूँगा. फर्स्ट इज इन पैरामीटर, नेम ऑफ पैरामीटर इज ID. सेकंड इज टाइप ऑफ पैरामीटर इंटीजर. Add one more parameter, that parameter is out. That name is branch
second parameter name is branch, so let write s underscore branch, and here s underscore id, and out parameter is varchar, and length of out parameter is 255. Okay, so let's start the write store procedure. So first of all, write begin and okay. So select star select branch into s underscore branch. From table name is student, and where student id is equal to, so this is a simple store procedure, right? So save the store procedure, go, and here you can see our store procedure is successfully created, right? So code we call our store procedure. So our store procedure name is test, and we pass two parameters, so write question mark. Okay, so these are unnecessary, so let me remove these unnecessary steps from here. Okay, so our fifth step is set the value. So cs dot set int, right? So set int, so here we pass one value, 1. This one shows this first question marks, and we will pass value from here like 3. Okay, cs dot register dot out parameter, and we will pass second. And so first of all, सो मैं पहले आपको समझाता हूँ रजिस्टर आउट पैरामीटर है क्या. सो रजिस्टर आउट पैरामीटर्स binds the data type, and this data types written from the store procedure, right? So second, and SQL types means which data types returns store procedure, like store procedure हमें कौन सा data type return करेगा, right? So types dot हमें कौन सा data type return करेगा, varchar. So यहाँ पे लिखेंगे हम varchar, राइट? क्यों हमें यहाँ पे varchar लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप जो हमारा सेकंड पैरामीटर है उसका डेटा टाइप रखा है varchar. सो दैट्स व्हाई दे रिटर्न varchar डेटा टाइप, राइट? ओके, एंड आवर सिक्स्थ स्टेप इज execute the statement, execute, right? So cs dot execute. Okay, our final step is print the return value of store procedure. So write system out println, and in which we will write a get method, right? cs get string, because store procedure return string, right? So get string, and second, because this is the return value, this question mark shows the return value, and we already seen store procedure. So let me once again show you store procedure. So our out is second parameter, so that's why I write here second. Okay, and let me run the code. Yeah, and finally we got the output mechanical. So in my database, third column branch is mechanical, so here I got mechanical output. So these are the steps you have to follow whenever you will use callable statement, right? So thank you friends to watch my video. If you like this video, then do like, share, subscribe, and if you have any query, then do comment in
below comment section, and don't forget to like, share and subscribe. Bye. See you in next video. Bye bye.